जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि भारत के साथ बाजवा साहब ने कहा है कि जी जंग वंग ना करो, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जी भारत जो है वो इस साल यानी 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि G20 ग्रुप में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा। और इसके लिए खैर नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए जी आपका पैसा, आप अपना पैसा अपने पास रखें। हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी बता दें, हमें सिर्फ वो तरीका बता दें जिससे कि भारत ने ये तरक्की की है और जिससे कि भारत में इतना पैसा आने वाला है या आ चुका है या आएगा, और इकोनॉमी उनकी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तरीका अगर मोदी जी अगर ये आप हमें बता देना तो बस मजा ही आ वैसे जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनती है, चार पांच छह असेंबलर्स हैं यहाँ पर जो गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन तीन चार उसमें से बंद हो चुकी हैं। अब उन्होंने अपने ऑपरेशन को बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, और जो इम्पोर्ट है सिक्योरिटी किट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, उसका लेके आना मुश्किल है, तो जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। कब खुलेगा? जब वो कहते हैं डॉलर्स होंगे, एलसीज खुलेंगी तो काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंतजार करते हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है जापान को, बीट कर लिया है, और जो थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल सेलिंग मार्केट थी जापान की, चीन और यूएस के बाद अब वो जगह हिंदुस्तान ने कैप्चर कर ली है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। और इस वक्त तकरीबन 4.22 मिलियन व्हीकल्स यानी ऑलमोस्ट 42 लाख से ऊपर गाड़ियां इस वक्त जो 2022 गुजरा है उसमें सेल आउट हुई है। और ये कोई मतलब अपनी तरफ से नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और सारे मीडिया पे और वेबसाइट्स पे ये खबर मौजूद It है। says India now seems unstoppable in its momentum to become the third economic superpower in the world. The think tank predicts that India will have overtaken Germany as the world's fourth largest economy by 2027, that India will overtake Japan to occupy the third spot by 2032, and that India will be a $10 trillion economy by 2035. In last year's report, India was expected to overtake Japan by 2031. The think tank has had to revise its predictions because of the war in Ukraine. Now, India's GDP is expected to grow at an average of 6.4% per year for the next 5 years. In the 9 years after that, India's GDP is expected to grow at an average of 6.5%, while India is still predicted to become the world's third largest economy in the next decade. In 2022, India is still classified as a lower middle income country. This is due to its per capita GDP of less than $8,300. The report states that India will only become the world's third economic superpower in the second half of this century. Now, the United States and China are predicted to remain above India for the foreseeable future, but revisions have been made to predictions about China as well. Earlier, the CEBR had said it was almost inevitable that China would surpass the United States. China's population is over 4 times the size of the US population. Once its per capita GDP becomes even a quarter of that of the US, China will have overtaken the United States. But slow growth, a shrinking labor force, the collapse of property firms and the zero-COVID policy-induced lockdowns have pushed the timeline for China to become the largest economy in the world. Now, the think tank says it may not happen until 2036. But there is a caveat. This is a scenario where China does not use force to take control of Taiwan. However, if Beijing does go ahead and invade and capture the self-governed island, the resultant war and sanctions may prevent China from ever overtaking the US.